welcomes to mechanics tutorial. Today we are going to solve the numericals on beams. Okay, ये वाला numericals है जो in previous two examinations में पूछा गया है. Okay, तो first step is to solve the problem of beam. First step is draw free body diagram. हमेशा आपको free body diagram draw करनी है first. Okay, तो for free body diagram you have to replace the support. Here support is hinge. यहाँ पर जो सपोर्ट एट पॉइंट ए जो है दैट इज हिंज. ओके, तो वहां पर रिएक्शंस आने वाले हैं दो. फर्स्ट वन इज ए वाई एंड सेकंड वन इज ए एक्स. ओके, सपोर्ट एट बी इज रोलर, तो वहां पर रिएक्शन एक ही आएगी. हमें पता है रोलर गिव्स यू ओनली वन रिएक्शन, बीम्स गिव्स यू टू रिएक्शंस. ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी एज इट इज. ये जो भी लोड है आपका 10 किलो न्यूटन, मोमेंट इज 20 न्यूटन पर मीटर. ओके, यहाँ पर लोड जो है दिस इज नॉट किलो, दिस इज ओनली न्यूटन. ओके, एंड लास्ट इज योर व्हाट 10 न्यूटन. ओके, सो द डिस्टेंस दिस इज योर 1 मीटर, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 1 मीटर, दिस डिस्टेंस इज अगेन 1 मीटर एंड दिस इज अगेन 1 मीटर. Okay, so this is the free body diagram of this beam. Here we just replace support into the equilibrium reaction. Okay, now the most important step number 2, that is reaction calculation. Reaction calculation. Okay, as beam is in equilibrium, so it must satisfy the equilibrium conditions, and we know that there are three equilibrium conditions: summation of f of x is equal to 0, summation f of y equal to 0, and moment at any point equal to 0. If beam satisfies these three conditions, that means beam is in equilibrium. Now if beam is in equilibrium, that means it must satisfy these three conditions. Okay, so first is summation of moment, summation of horizontal force equal to, okay, 0. First condition is summation of horizontal forces equal to 0. In this figure, horizontal force is only Ax. Horizontal force is only Ax. Okay, so therefore Ax is equal to 0. So first reactions we get it. Now second step is vertical forces. Summation of vertical forces is equal to 0. Now all upward forces positive, all downward forces are negative. Here Ay is moving upward to positive, Ai is moving upward, so it is positive. 10 moving downward, so it is negative. Again this 10 moving downward, so it is negative. Rb is moving upward, so it is positive, equal to 0. That means Ay plus Rb equal to 20. This is your equation 1. And the third condition, moment at point A equal to 0. Okay, मैं मोमेंट ए पर ले रहा हूँ बिकॉज Ax एंड Ay बोथ आर एक्टिंग एट ए, तो वो दोनों भी मोमेंट सेंटर से पास हो रहे हैं, तो दोनों की वजह से मोमेंट आएगी आपकी 0. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए. जनरली यू हैव टू टेक द मोमेंट एट पॉइंट ए और बी. ओके, तो उसमें से आपको रिमेनिंग वन मिलेगा. तो यहाँ पर Ax एंड Ay बोथ आर पासिंग थ्रू द मोमेंट सेंटर, सो दे विल क्रिएट 0 मोमेंट. ओके, now 10 newton. Now again 10 newton is moving in clockwise direction. Okay, तो ये पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करेगा. हमें पता है क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज नेगेटिव. तो ये आएगा आपका 10 into distance is 1. Okay, now this 20 is external moment. Okay, so and it is clockwise, so plus 20. Okay, यहाँ पर फोर्स है, ये मोमेंट है, so no need to multiply by distance. ये फोर्स है, so force into distance, that is moment. But this is your external moment, already distance multiply करके ही दिया हुआ है, so no need to multiply it by any distance. So take directly as it is. It is clockwise, so positive. Again this 10 newton, it is also moving in clockwise direction, so plus 10 into 3, plus 10 into 3. Now this Rb is moving in anti-clockwise. Rb is moving in anti-clockwise, so minus Rb into distance is 4 equal to 0. Okay, so here it is 10 plus 20 plus 30. Okay, minus 4 Rb
equal to 0. Okay, therefore 4RB equal to 4RB is equal to 30 plus 20 50 plus 10 60. Okay, तो RB is equal to क्या आएगा आपका? RB is equal to 60 divided by 4. 60 divided by 4, that is 15 kilonewton. 60 divided by 4 और वो आएगा आपका 15 kilonewton. Okay, so here from equation 1 put the value of RB in equation 1. Okay, so from equation 1 क्या है? AY plus RB equal to 15. तो AY RB की वैल्यू 15 एक पता है हमको, so AY is equal to क्या आएगा फिर? AY is equal to 20 minus 15, that is 5 kilonewton. 20 minus 15, that is equal to what? 5 kilonewton. Okay, so in this way you get the reactions. Okay, thank you.